Assalamu alaikum students. This is your lecturer Saima Yaqub from PMDC Girls Hyderabad, and today we are going to start with the second chapter, that is psychology of adjustment. So to begin with, we are going to start with what is the concept of mental health, and then what are the characteristics of a mentally healthy person. If we talk about the concept of mental health, health is defined as a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease. So, mental health is basically the balanced development of the individual's personality and emotional attitudes which enable him to live harmoniously with his fellow men, right? Like, I mean, if you are mentally balanced and if you are healthy mental wise, you will be able to treat the people around you in a positive manner, and you are being liked by the society, and you are quite open to the society, to the criticism, and to everything. This is what mentally healthy means. To start off with the characteristics of a mentally healthy person, it's a kind of a check as well. By reading these points, you can also do your self check as well, that where do you stand, or anybody who wants to know what are the demands of a mentally healthy person, or the requisites of the mentally healthy person. So they can just, it works as these points work as a questionnaire as well, or they can, do the self analysis as well by keeping these points, reading these points, and analyze themselves. So number one is that he feels comfortable about himself. That is, he feels reasonably secure and adequate. ठीक है? Whatever they are, however they are, they think that they are fine and they are secure about themselves. There is no fear, that if they are being ignored, or होता है ना थोड़ा सा, sometimes you feel that मुझे अपना आप कम लग रहा है, किसी से अपने आप को कमतर नहीं समझते. दे थिंक दैट दे आर फाइन एंड दे आर एबल टू डू देयर सोशल ड्यूटीज इन अ पॉजिटिव मैनर. Then next point is that he neither underestimate nor overestimate his own abilities. It goes both for men and women, all these points, that वो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करते या ओवर एस्टिमेट नहीं करते. अंडर एस्टिमेट करना ये होता है दैट यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग और कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग. ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी टास्क है, तो आप अपने आप को कमतर समझें कि नहीं, ये मुझसे अच्छा कर सकती है या कर सकता है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता. ठीक है, we, because being a healthy human being, we all are normal, and a normal person can achieve any target, ठीक है, based on their capabilities. और overestimate जो होता है वो ये होता है कि when you are trying to be थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को वो कर लेना कि मतलब सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई भी नहीं कर सकता. दिस इज़ व्हाट ओवर एस्टिमेशन इज. सो देर इज़ ऑलवेज अ मॉडरेट वे. neither you underestimate yourself nor overestimate yourself. You just take the midway, right, and go according to that. The third point is that you accept your shortcomings, right? Whatever shortcomings you are, being a human being, हम सबको पता है that to err is human. इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे गलतियां होती हैं, एंड लेकिन हमारा ये होता है कि समटाइम्स वी डोंट एक्सेप्ट, राइट. कोई शॉर्ट कमिंग है हमारी पर्सनैलिटी में, एज यू नो नोबडी इज़ परफेक्ट. तो हम अपने आप को परफेक्ट समझना, और उसके बाद कोई भी आपके अंदर कोई छोटी मोटी कोई गलती है या कुछ है तो उसको एक्सेप्ट ना करना इज़ ऑल्सो
a problem that a person has some mental issues. So one should be brave enough to accept their shortcomings, ठीक है, कुछ छोटे मोटे flaws personality में हो उनको accept करके और उनको polish करने की कोशिश करनी चाहिए. Another one is that you have self-respect, right? You respect your own very self. You think that, you are a part of a society and you are a positive person, right? This should be something that has to be accepted in a positive manner as well. Self-respect is very important. If you respect yourself, so you can make yourself, being respected outside in the society as well. Another one is that you feel right towards others. This means that you are able to be interested in others and to love them. Okay? You get right feelings. You are not pessimistic all the time. Whenever you meet people, you accept them along with their own abilities. You don't try to judge them all the time, and you accept them the way they are and you feel good towards them. Okay? So this means that you are able to be interested in others and love them. You can take interest in the other person. जिस तरह हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं तो हम लोग ऐसी फ्रेंड्स बनाते हैं कि हम ज़्यादातर कोशिश हमारी होती है कि हम लोग लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को देखें. तो जो हाउ वी फील टूवर्ड्स अदर्स, राइट, अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो हम औरों में भी नेगेटिविटी ही तलाश करेंगे. लेकिन अगर हम लोग राइटियसनेस देखेंगे तो अपने में हमारे अंदर होगी तो वी विल फील गुड टूवर्ड्स अदर्स एज वेल. ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट्स को हम लोग ऑन अ राइट डायरेक्शन रखेंगे. Then he has friendship that are satisfying and lasting. Their friendships are longer. It's not on short based. Okay, बाज लोग होते हैं ना, they have some interest involved, and then when the interest is over then they don't want to keep that friendship anymore. तो जो हेल्दी माइंडेड पर्सन होता है उसकी जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो भी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं. ठीक है, एंड देर सेटिस्फाइड विद देयर फ्रेंड्स. दे मेक श्योर दैट देयर टाइम स्पेंड विद देयर फ्रेंड्स इज गुड एंड इट्स पॉजिटिव, एंड दे आर गेटिंग पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम from the company that they are in. Next point is he is able to feel a part of a group and is able to like and trust others. ठीक है, you when you are in a group, so you don't want to feel secluded, you don't want to feel yourself as separated. You become one with the group and you like to work with them. You trust their capabilities and abilities and they trust yours. So once you are a part of a group, you don't feel and you don't keep yourself aloof from them that you are somebody special. ठीक है, जब आपको मतलब लोगों में घुल मिल जाना आराम से. और ये किसी भी पर्सनैलिटी की एक बहुत प्यारी बात है कि किसी भी माहौल में किसी भी ग्रुप में किसी भी जगह पर यू गेट वेल एडजस्टेड. ठीक है, जो एडजस्टमेंट नहीं करते हैं लोग वो बहुत जल्दी जो है वो अलग हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड दैट इफ़ यू आर अ मेंटली हेल्दी पर्सन, you are adjustable, you are compensating, all right, and you can easily get involved with the activities, right, and you are comfortable with them and they are comfortable with you. Coming up to the next point, he is able to meet the demands of life. He is able to think for himself and to take his own decisions. ठीक है, जब आप mentally healthy होते हैं, stable होते हैं, तो you are comfortable in taking your own decisions of life. आपको कोई problem नहीं होती है उनमें. और जो भी life आपसे demand करती है, because in our life we meet certain challenges. It's not that always the things happening in our life are in our own interest all the time. बाज़ात ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, especially when you enter in your own प्रैक्टिकल लाइफ, तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ऐसे फैसले खुद से करने होते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव हो दैट यू आर कंफर्टेबल इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस. ठीक है, तो उसके लिए आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है.
You set reasonable goals for yourself. ठीक है, you have goals that you want to do this, you this अभी इस लेवल पर भी आप लोग सब साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने चूज़ किए, तो you have some certain ideas in your mind that what do you want to become once you are done with your studies. तो कुछ goals हम लोग अपनी life में set करते हैं, but you know a person who is not mentally healthy, they cannot decide on themselves on their own, and they cannot set their goals. उनका ये होता है कि they are continuously controlled by their instincts, ठीक है, या by the people surrounding them, ठीक है, तो आपको अपना खुद से जो डिसीजन लेना होता है, अपने जो गोल्स सेट करने होते हैं, वो भी एक निशानी है ऑफ अ हेल्दी माइंड. यू आर फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट. आपकी किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रही होती हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रही होती हैं. यू आर कंफर्टेबल इन वट एवर यू आर. बाज़ात हमारे जहन में ये होता है कि अगर हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो अंदर से एक में पावर जो है वो कुछ रोकने की कोशिश कर रही है. समटाइम्स देयर इज़ नेगेटिविटी अराउंड अस, राइट, एंड वी आर ओवर पावर्ड बाय देम. तो यू आर स्ट्रांग विद इन योर सेल्फ क्वाइट मच दैट वो जो आपकी क्रिटिसिजम्स है, जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आपको किसी किस्म के तरीके से भी पकड़ नहीं पाती हैं, ठीक है. एंड यू आर ईजीली out of the conflicts within your mind. Next point is you accept criticism and you are not easily upset. Being in a society where you are surrounded by negative and positive people, it is very natural that you face criticism, ठीक है. अब नेगेटिव क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली लेना और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को भी समटाइम्स नेगेटिवली लेना इज समथिंग विच इज़ नॉट अ मार्क ऑफ अ हेल्दी माइंड. क्रिटिसिज्म क्या चीज़ होती है? क्रिटिसिज्म ये चीज़ होती है कि आपने एक काम किया, अब उसके बाद जब आपने उसको प्रेजेंट किया है तो हर एक अपने कैलिबर के मुताबिक उसको जज करता है. सो लोगों की जजमेंट क्या है एंड हाउ दे जज योर वर्क, हाउ दे जज योर ओपिनियन, ठीक है. तो उन दोनों चीज़ों को इन अ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला क्रिटिसिज्म है, जो नेगेटिव वाला क्रिटिसिज्म है, दोनों चीज़ों को आपने किस तरीके से लेना है एंड हाउ यू रिएक्ट, ठीक है. सो यू डोंट गेट इजीली अपसेट, राइट. अब हमारी लाइफ में बहुत सा ऐसा होता है कि अगर किसी ने हमारे किसी ड्रेस के ऊपर बात की या कुछ किया तो हम फ़ौरन से माइंड कर जाएंगे, हमारे गेट तैयार होने पर हुआ. बट होता ये है कि हम हमेशा लर्न कर रहे होते हैं. यू आर ऑलवेज लर्निंग. वट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग, यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट, right. It's not always that criticism is always to be taken negatively. It is that it is the opinion coming to you from the different mindsets and how you tackle with them. So you should not get easily upset with any kind of a criticism. Give it a time, think over it, all right, and measure it positively. Then you have good self-control in any kind of a situation. You don't panic, you don't get angry, and you control yourself. If you are happy, very happy, even then you control your emotions. If you are upset, even then you are in control of yourself, right. And you don't show such signs of panic and boredom or pain or something on your face, right. And you have a good control of yourself, ठीक है, in whatever situation you are through. Next is that you face problem and try to solve them in an intelligent way, right. So how you face your problems and how you solve them, right, is on your part, and it always comes with an experience. It always comes if you have a good self control. So it's like basically क्या है characteristic of a mentally healthy person, that you what you have, how much control you have on your own personality, on your own inner self. The more control you have on your inner self, the better a person you are, the in a better way you can deal with the issues that come up to your life, right. And the more mentally healthy person you are.
Acha, over here, I hope that you all won't be having any trouble in this topic. Just to get a good grip on this topic that we have studied today, I would like to, give you a very short assignment. It's a kind of a self-assessment that keeping all these characteristics of a mentally healthy person in your mind. ये जो points हमने discuss किए, evaluate yourself and find out that to what aspect you can bear any kind of a criticism. आप लोग सब अभी इस स्टेज पर हैं कि आप लोगों के फ्रेंड्स भी होते हैं, आप लोगों के साथ मिलते भी हैं, right? You are in your teenage. So at this level, where do you stand? Where do you find yourself in facing any kind of a criticism? इस पर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और यहाँ पर ही शेयर करना है अपनी जो आपकी असाइनमेंट सेक्शन है, एंड आई विल रीड अबाउट इट. ठीक है, यू कैन राइट योर नेम, you can write your class, and then after that you just give an answer, right, in 2-3 lines, that how you face criticism, any kind of a criticism. ठीक है, और जो आपकी मेन लर्निंग की असाइनमेंट है वो ये है दैट यू हैव टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन. इट्स ऑन पेज 52 and 53 of your book. ठीक है, learn them thoroughly and prepare them for your upcoming assignments. Thank you. Have a good day.